Welcome back, friends. So, we had the good news of Jeremy Powell last week talking about the bond market doing the work of the Federal Reserve. That the bond yields had shot up so dramatically itself showed that the US Fed did not really need to do more. The bond market was doing the work for Jeremy Powell. And that was good news treated by the market. But friends, whenever such a news comes out, it is a knee-jerk reaction. You saw for a few days a furious rise in the Dow and S&P and Nasdaq. Even across the world, you saw global markets doing well. But always there is something negative which is attached to thing. For example, if you go back and read maybe around 11 years back, I written an article in the Economic Times. Rise in oil prices is something which is maybe representative of a good economy. But if you have a fall in oil prices, is it a blessing or a curse? It can be blessing for a country like India, which is a net importer. It can also be a curse because it could be showing signs of a rapidly falling global economy. Similarly, if the yields are falling now, that could be representative of the fact that the world economy, that the US economy is going into a tailspin downwards. The biggest problem that we saw, which can become a problem in the future, is the US jobs report. It shows a weakening labor market. Only 150,000 addition to the workforce as compared to the expectations of 175,000, which is good. It shows that the economy is slowing down. This is exactly what the Federal Reserve wanted, so that they can keep the interest rates just the same place or start thinking of bringing it down. But at the same time, it also shows the signs of a rapidly weakening US economy. Now, history has shown that the effects of a US Federal Reserve rate hike starts showing up around 18 to 22 months down the road. It has been 18 months since the US Federal Reserve started hiking interest rates. We are, I guess, around the 20th month. So this is just about the time when the effects of the rate hike is being seen in the US labor market. Now, the problem is that this can, once this slowness or slack in the labor market starts showing up, it can rapidly gather force. Okay, initially it takes a lot of time because of the lagged effect, but so as Jeffrey Gundlach talks about, that this could lead to layoffs coming up over the next few months, quarters, and that can have an impact on many companies across the world as well. If the US economy slows down, it could impact the Indian IT firms, for example, and the hiring, which already is in some sort of a squeeze. We have Bill Gross talking about the fact that the PE ratios are still very high, around 17 to 19 for the S&P 500 and Nasdaq, as compared to what he would like, a comfortable 15. However, it's only the PE ratios itself are not representative of the state of the market. The falling jobs combined with falling earnings of companies, corporate earnings, when they start coming down, these two, when they combine together, this compared with high PE ratio shows that it's time for markets to come down. And this is the time when you also gauge that a recession is really coming and alive and kicking. Friends, it's a good sign that the jobs report was soft, shows that the Federal Reserve may also have to be soft now, but there is a problem in the future. You may have to face a scenario from here onwards where signs of a recession may start increasing very quickly, very fast, which can come and impact stock markets. To get to know more for the US markets, please do join our Prime or Prime Plus groups. For the Indian markets, you can still join our World Cup special bonanza, which gives you daily predictions. You can join the very precious premium value group, which gives you 1 week predictions in advance. Buy your Beno. इस हफ्ते में आपने देखा कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरेमी पावल ने कहा कि बॉन्ड का जो मार्केट है, उन्होंने काम किया जो वो खुद नहीं कर पाए, तो अच्छा बढ़ते गया। बॉन्ड यील्ड जो बढ़ रहे थे वो थोड़ा सीमित होकर इनफैक्ट थोड़ा गिरे इस हफ्ते में। उनके हिसाब से कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इससे फेडरल रिजर्व जो है वो भी थोड़ा सा अभी थम जाएगा। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जॉब की जो रिपोर्ट आई है, लेबर की रिपोर्ट आई है शुक्रवार को, वो एक कमज़ोर इकोनॉमी की दिशा की तरफ
संकेत दे रही है, और जब ये कमज़ोर होना शुरू होता है लेबर मार्केट, तो ये संदेह दे रहा है कि अब रिसेशन या मंदी का दौर आने की संभावना बढ़ जाती है अमेरिका में भी और फिर विश्व में भी। और ये बड़ी बात ये हो जाती है कि जब ये संकेत आने में बहुत टाइम लगता है, फेडरल रिजर्व ने 18 महीने हो गए ये बढ़ाते बढ़ाते, अब ये 20वां महीना लगभग आ चुके हैं। जब ये जॉब्स की रिपोर्ट एक बार कमज़ोर आनी शुरू होती है तो फिर बहुत फास्ट पेस कैच करती है और इससे ले ऑफ्स भी बढ़ जाते हैं। अगर अमेरिका की इकोनॉमी मंदी की तरफ जा रही है तो भारत की भी इकोनॉमी में इसका इम्पैक्ट आएगा, आईटी फर्म्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो ये सब आगे कहाँ मंदी आ रही है, बहुत फास्ट पेस अब कैचअप करेगी। जाने के लिए ज़रूर ज्वाइन करें हमारा या तो वर्ल्ड कप स्पेशल पैकेज भारतीय मार्केट्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं जो डेली प्रेडिक्शंस देता है। एक हफ्ते का प्रेडिक्शन के लिए प्रीमियम वैल्यू ज्वाइन करिए, या फिर अमेरिकन मार्केट्स के बारे में आप एक्सक्लूसिवली जानना चाहते हैं तो प्राइम प्लस ज्वाइन करिए। भारतीय मार्केट के लिए अब भी वर्ल्ड कप स्पेशल पैकेज, वर्ल्ड कप चल रहा है, अब तो सेमीफाइनल्स करीब आ रहे हैं और साउथ अफ्रीका से इंपॉर्टेंट मैच भी है भारत का। जब तक ये चलेंगे तो ये वर्ल्ड कप पैकेज चल रहा है, डेली प्रेडिक्शंस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्रीमियम वैल्यू बहुत खूबसूरत आपको एक हफ्ते का प्रेडिक्शन एडवांस में दे देता है। और ये ले लीजिए पूरे महीने भर जो है, अगर आप जानना चाहते हैं कहाँ मार्केट्स जा रहे हैं तो प्रीमियम प्लस, प्रीमियम एलीट है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। संपर्क करने का नंबर सबका वही है 9820861044। याद रखिएगा जब विश्व में मंदी का दौर आएगा तो उसका इम्पैक्ट ज़रूर मार्केट्स पे पड़ेगा। अपने पोर्टफोलियो संभाल के रखिए। करोड़ों रुपए लोगों ने डाल के रखे हैं म्यूचुअल फंडों में, अपने शेयरों में, और इन सब के ऊपर इम्पैक्ट आना है और ये जो है आपको ज़रूर दिखाई देगा। आप लोग डिफ़र कर सकते हैं अपने ब्याज दर को, जिस तरह से संभाला गया है। पहले बहुत लो रखा था, फिर अब थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाए। दूसरी बात यह है कि अमेरिका में भी इलेक्शन आ रहे हैं, भारत में भी इलेक्शन आ रहे हैं, तो इसमें जो उनके सेंट्रल बैंक्स हैं वो वैसे भी काफ़ी प्रेशर में रहेंगे कि ब्याज दर को आप थोड़ा नीचे रखिए। लेकिन आप कितना भी नीचे रखें, अगर एक मंदी का दौर स्टार्ट हो जाता है, जैसे मैंने काफ़ी मेहनत करके इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो उसका इम्पैक्ट शेयर बाज़ारों पे ज़रूर पड़ेगा। और लास्ट, हमारे वीडियोस जो हैं ज़्यादा एजुकेशन की तरफ ध्यान देते हैं। ये बाय या सेल रिकमेंडेशन से ज़्यादा आप इन्हें एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से लीजिएगा। हम स्ट्रिक्टली ये कहना चाहते हैं, आप ध्यान से सुनिए। एजुकेशन हमारा मेन मकसद रहा है। मैं हमेशा ज्ञान बांटने की चेष्टा ज़्यादा करता हूँ। बाय सेल रिकमेंडेशन से इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजुकेशन है हमारे वीडियोस का। ज़रूर संपर्क करें 9820861044। नमस्ते।